to my YouTube channel Knowledge Express। तो आज हम MPPSC मेंस पेपर 4 की फर्स्ट टॉपिक एप्टीट्यूड उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन दिस वीडियो हम एप्टीट्यूड की कॉन्सेप्ट डेफिनेशंस क्या होती है वो पढ़ेंगे, हम टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एप्टीट्यूड और उनकी जो टाइप्स है उसमें उनकी सब टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। Then we will read about the differentiation between the aptitude and the attitude. So we will go one by one. So concept and definition of the aptitude. Aptitude is derived from the Latin word aptus, that means the fitness or adeptness. For what it says, aptitude says it means the potential which an individual has for learning the skills that is required to do a job efficiently. हम सबको पता है अगर हमें efficiently job performance करना तो हमें उस job से related what we require these skills. That is called as aptitude. For example, आप सबको MPPSC क्लियर करना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना है तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसमें वो सब्जेक्ट्स रहेंगे उनको पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम MPPSC में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी ये सब कवर अप करते हैं, बट दो वी डोंट रिक्वायर इन आवर प्रोफेशन, बट स्टिल व्हाई वी आर लर्निंग इट, बिकॉज टू मेजर आवर एप्टीट्यूड, टू मेजर आवर पोटेंशियलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अगर हम वो क्लियर करेंगे मीन्स देन ओनली वी कैन बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू, राइट। तो इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि we can cover up all these syllabus and can write the exam properly. Then second is it is defined as an acquired or natural ability, usually measurable with aptitude test for learning and proficiency in a specific area as a discipline. This is the another definition of the aptitude. Then aptitude is expressed in interest reflected in current performance. कैसे? तो I'll give one example about this. आप सबको इंटरेस्ट है कि आप सबको MPPSC क्लियर करना है, दिस व्हाट इट विल एक्सप्रेस इन योर इंटरेस्ट एंड हाउ इट विल रिफ्लेक्ट इन योर करंट परफॉर्मेंस कि आप कैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं। ओके, सो एप्टीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन इंटरेस्ट रिफ्लेक्टेड इन करंट परफॉर्मेंस व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव ओवर टाइम विद ट्रेनिंग एंड विद मोर प्रैक्टिसिंग यू कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस। द थर्ड डेफिनेशन हियर इज अ नेचुरल और एक्वायर्ड डिस्पोजिशन or capacity for a particular purpose or tendency to use to particular action or effect is what the aptitude. For example, oil is an aptitude to burn. Oil के पास इतना potential है कि वो जला सकता है. Oil के पास एक capacity है, right, to burn. That's why it's called as aptitude. So it is very important to have an aptitude in each and every individual to have a good job and to and for further purposes. Now the fourth one is an aptitude is a competency to do a certain kind of work at a certain level which is considered as a talent. It is the ability to deal with aspect of environment and to perform a particular behavior. Aptitude को मैं भी बोल सकती है कि ये हमको क्या बताता है कि हम कितने competent हैं, what all competencies we have, where we have to work out, where we have to not, and at what level we need to work out. And इसको हम talent भी बोलते हैं aptitude को। So aptitude it may be the physical or mentally, दोनों फॉर्म में हो सकता है। Now the another definition which covers the aspect of the adeptness and quickness. Aptitude is defined as adeptness and quickness to succeed in a specific field of activity. It is a present condition that is indicative of individual potentiality for the future. Aptitude अगर अच्छा है तो we can even identify कि उसका future performance क्या होगा. We can actually predetermine कर सकते हैं on the basis of his aptitude. Now, this is very important. We should always, अगर एप्टीट्यूड से कोई भी क्वेश्चन आता है गाइस तो हमको ये टर्म्स इंपॉर्टेंट करना ये टर्म्स को लिखना बहुत जरूरी है। एप्टीट्यूड में देखो टाइम प्लस एफर्ट इज इक्वल्स टू लर्निंग। हम सबको पता है टाइम लगता है, मेहनत लगती है, एफर्ट लगती है तो हम सीखते भी हैं, राइट। तो दिस लर्निंग विल हेल्प टू गेनिंग द एप्टीट्यूड फॉर अ न्यू थिंग एंड नाउ वी गेट द एप्टीट्यूड फ्रॉम द टाइम एंड एफर्ट। सो एप्टीट्यूड प्लस ट्रेनिंग इज इक्वल्स टू एबिलिटी. Ability likes whatever the things you can do. For example, you can do the addition, subtraction, division. This is what your ability. For example, you cleared the MPPSC exam. आपने interview भी निकाल दिया. If you get the training in that, obviously you would be able to do that job efficiently, right? So aptitude plus training is equals to ability, and ability plus practice is equals to skill. So skill is what? The proficiency you gain with your repeated activity. अगर आपकी जॉब लग गई है, अब आप उस प्रोफेशन को एंजॉय करोगे, उसको प्रैक्टिस करते रहोगे डे बाय डे, तो क्या होगा? यू विल बिकम स्पेशलाइज्ड, यू बिकम सो स्किल्ड इन दैट। फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ अस कैन ड्राइव, बट वी आर नॉट स्किल्ड ड्राइवर्स लाइक अ माइकल स्टम्बर। हम उसके इतने स्किल्ड नहीं है, दो वी कैन ड्राइव इट,
This is what the difference is. So here we need to remember these words. Time plus effort is equals to learning, and which helps to gain the aptitude. Aptitude plus training is equals to ability, and ability plus practice is equals to skills. Now, aptitude test is what? It measures the latent ability or potential of a candidate to learn a new job or skill. Like कितना आपके पास potential है. Latent ability, what is this? What latent means? मतलब हमारे पास वो ability जो exist है हमारे अंदर, but it is not visible to everyone. So it measures the latent ability or potential of a candidate to learn a new job or skill. This is what the aptitude. It measures an applicant's capacity and his potential for development, and it measures peculiarities and defects in a person's sensory or intellectual capacity that can be detected through this test. Obviously, peculiarities matlab aptitude will help you to measure your quality and whatever the defects an individual have. Now, aptitude also focus the attention to a particular type of talent, like तुम्हारी reasoning पे focus करवाएगा वो, learning पे करवाएगा, mechanical bent of mind, इन सब पे क्या करता है? Aptitude focus करवाता है. Now further we will discuss about the types of aptitude tests. तो aptitude test किसी भी workers की success के लिए, किसी भी individual person के लिए aptitude बहुत जरूरी होता है. अब इसमें हमारे तीन types of aptitude test होते हैं. First one is mental or intelligence or cognitive test. Second one is mechanical test, and third one is psychomotor or skill test. Under the first one, these are the subtype of test. So we'll discuss further. First, we will discuss about the first type of aptitude test is what? Mental or intelligence or cognitive test. So these tests measure the overall intellectual capacity or cognitive abilities of a particular person. For example, whether a supervisor candidate has the intelligence to do the paperwork, or whether a bookkeeper candidate has the required the numeric aptitude. This is what the mental. तो ये क्या हमारा mental test है. From there you are recognizing it. क्या मुझे bookkeeper को numeric चीजों को maintain करने की जरूरत है कि नहीं है, या वो खुद ही इतना retain कर सकता है. This is all included in the mental test. Second one is the IQ, intelligence test. Question: IQ is what? IQ it will help in determining the individual's overall intellectual capacity आपकी कैसी है. Your capacity to deal with the problem. अगर आपके पास एक अच्छा IQ है तो you will have a good work fluency. You can memorize many of the things, and you can inculcate in your reasoning, speed of perception, spatial visualization, ability to understand the instruction. If you have a good IQ, you can easily understand the instruction given by another person. Ability to make the decision properly. This is what all the things is covered in the IQ test. Now talking about the cognitive test. First, in the cognitive test, we have three types of subtests: Stanford-Binet Intelligence Test, Wechsler Intelligence Scale for Children, and Wonderlic Cognitive Ability Test. This will come under the mental cognitive test. के अंदर हमारी ये तीन सब टेस्ट हैं. तो ये तीन टेस्ट का मैंने अच्छे से यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिया है. If you can see in my table form chart. तो यहाँ पर Stanford-Binet Intelligence Test क्या बोलता है? It is a standardized test that assesses the IQ and cognitive abilities for the children and adults. ये दोनों के लिए है, children के लिए भी और adults के लिए भी. Age क्या होना चाहिए? 2 to 23, obviously because we are covering children also, including the adult. And areas where this test can be good for the verbal reasoning, for the quantitative reasoning, abstract and visual reasoning, and short-term memory skills. And it even covers the 15 subsets like this only. Now, second one is Special Intelligence Scale for Children. So, first of all, it is given by the Dr. David Wechsler. Is an individually administered the intelligence test for the children. ये दोनों सिर्फ childrens के लिए बनाया. That's why age हमने कितनी रखी है? 6 to 16. यहाँ पे adults के लिए था, इसलिए age का differentiation था 2 to 23. अब you can easily differentiate this. And it generates an IQ score which represents a child's general intellectual ability कितना है. ठीक है? Now the subjects they are covering it here: vocabulary, similarities, comprehension, information, block design, picture competitions, letter number reasoning, and all. And under this, now the last one is Wonderlic Cognitive Ability Test. It is given by the Alden F. Wonders, if you can see here. तो ये क्या था? एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे. तो उन्होंने क्या किया था कि ऐसा टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था जो 12 मिनट का और उसमें 50 क्वेश्चन हो. It is of like 12 minute and 50 question test that will use to assess the aptitude of a prospective employee for learning problem solving in a range of their occupations. आपका जो भी occupations है, आप जिस भी occupations में work करते हो,
वर्क करते हो तो आपका पोटेंशियल कितना है इस टेस्ट के थ्रू पता चल जाएगा, जिसमें आपको 12 मिनट का टाइम समय दिया जाएगा और 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे. It contains a question which is appropriate for the 21st century and available online printed form, and wherever the original test is and where original test is only available on the paper. अगर आपको पता हो तो इस टेस्ट के अंदर it contains the questions appropriate for 21st century. मतलब जो भी recent से questions होंगे ये सारे वो सब कुछ cover up करेगा, and it will available in both in online form also and in a printed form also. So these are what the differentiation of these subtests like Stanford Weighted Intelligence, Western Intelligence Scale for Children, Wonderlic Cognitive Ability Test. Now, what is the limitation of the IQ test? First of all, ये बहुत expensive है, time taking है, but these tests criticize on the grounds of discrimination against the weaker section of society. This is one of the what we can say कि बहुत ही limitation बहुत genuine है. अगर आप वीकर सेक्शन का एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर करके ये बोल रहे हो कि इनका IQ स्कोर कम है तो ये बहुत ही गलत है, बिकॉज दीज पीपल डोंट गेट द प्रॉपर रिसोर्सेज so that they can improve their education, or they can increase their aptitude level or the potential level to do a particular work. So this test is criticizing on the grounds of the weaker section of our society. This is what we have discussed about. Now the second test is what mechanical aptitude test. The aim of such test is to measure the applicant's aptitude for the job in question, and second, the test the applicant's understanding of basic mechanical principles. Applicants को कितना mechanical principles के बारे में understanding है, कितना उनको knowledge है, ये हमें इस test से पता चलता है. It even measures the capacity to learn a particular type of mechanical work, capacity for spatial visualization. Spatial visualization जिनको नहीं पता है तो वो 3D फॉर्म में होता है. हम 3D थिएटर में जाते हैं ना मूवी देखने के लिए, उस टाइप का ही हमारा इसको बोलते हैं स्पेटियल विजुअलाइजेशन. देन इट हेल्प्स टू मेजर द परसेप्चुअल स्पीड, मैनुअल डिटरेक्सिटी. डिटरेक्सिटी मतलब कि कोई सा भी वर्क जो हम उसको हाथ से करते हैं ना एक पैटर्न फॉर्म में, उसको बोलते हैं मैनुअल डिटरेक्सिटी. विजुअल इंसाइट्स, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ टेक्निक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, टेक्निकल कोलैबोरेशन. यूजफुल दिस टेस्ट, मैकेनिकल टेस्ट इज यूजफुल फॉर सिलेक्टिंग अप्रेंटिसेस. एप्रेंटिसेस अगर हमको पता हो तो जब हम ट्रेनिंग या इंटर्नशिप में लेने जाते हैं तो हम किसी के अंडर में वर्क करते हैं टू लर्न द सिमिलर वर्क, राइट. तो दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग द एप्रेंटिसेस, मैकेनिक्स, मेंटेनेंस वर्कर्स एंड मैकेनिकल टेक्निक्स. आप अब ये जनरली ये टेस्ट कहाँ यूज होता है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई बाय हिज नेम ओनली. उसके आप बाय इट्स नेम, आप उसके नेम से पता लगा सकते हो इस टेस्ट का यूज ज्यादा कहाँ होता होगा. इस टेस्ट का यूज होता है सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में, मैकेनिकल टेस्ट का यूज. दैट so here it is written there, this is generally conducted in industries. Now the third one, last one test is what? Psychomotor skill test. So this skill test is help in maintaining, measure many motors or physical activities. Physical activity जो भी हम अपने हाथ से करते हैं, like finger dexterity. Dexterity मतलब कि I have already told you, जो भी हम हाथ से मैनुअली जो वर्क करते हैं उसको बोलते हैं. आपकी अगर आप फिजिकली कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेंथ को भी वो बताएगा, आप मैनुअली कितना काम कर रहे हैं, आपके मस्कुलर मूवमेंट, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ योर फिंगर्स, हैंड्स एंड आर्म्स मूवमेंट, आप कैसे अपने आर्म्स का मूवमेंट हो रहा है. तो ये सब पता चलता है हमारी स्किल टेस्ट और फिजियोमोटर टेस्ट में. दिस यूज फॉर सिलेक्टिंग द वर्कर्स हु हैव टू परफॉर्म सेमी स्किल्ड. ऑब्वियसली जो सेमी स्किल्ड है, जो ओवरऑल जो रिपीटेटिव जॉब्स करते हैं लाइक असेंबलिंग वर्क, उसके बाद में उसको पैक करना, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन के लिए भेजना, जिनका ये रिपीटेटिव जो फॉर्म होता है वर्क्स का, उनके लिए ये यूज होता है ये फिजियो टेस्ट और मोटर टेस्ट. तो बेसिकली दिस यूज फॉर इन मशीन ऑपरेटर्स, पुलिस कैंडिडेट्स, इन सब में हमें फिजिकल चीजों का ज्यादा यूज करना पड़ता है, तो वेयर दिस टेस्ट इज रिक्वायर्ड. नाउ अंडर द फिजियोमोटर और स्किल टेस्ट, इसके अंदर सब टेस्ट जो है वो है स्ट्रॉम्बर्ग डेक्सटेरिटी टेस्ट. तो अब इस टेस्ट में क्या होता है, एसडीटी टेस्ट, इट रिक्वायर्स अ कैंडिडेट टू फॉलो अ स्पेशल पैटर्न ऑफ द आर्म एंड हेड मूवमेंट. कि आपको एक पैटर्न बता देंगे कि आपको ऐसे अपने आर्म्स को ऐसे मूवमेंट करना है, अपने हैंड मूवमेंट आपको ऐसे करना है, तो दे विल स्पेसिफाई यू, राइट. सो दिस इज व्हाट द physiomotor or skill test, and SDT test comes under this thing. Now the last topic we will discuss here,
द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। तो अब हम एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के डिफरेंसेस देखेंगे। यहाँ पे कोटेशन लिखा है, अगर आप एग्जाम्स में मीन्स राइटिंग में कोटेशन मेंशन करते हैं दैट विल help you to make your answer more unique as compared to other. So here what is there, your aptitude not your altitude will determine your altitude, not so the differences between here aptitude and altitude is defined. It's a natural tendency at or talent ability, and altitude is a way of thinking, acting or feeling. Obviously आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, हमारा क्या होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड फीचर्स इट इज अ टैलेंट एंड एटीट्यूड का फीचर क्या है, इट इज द टेम्परामेंट। एप्टीट्यूड फीचर इज गोज टू इंडिविजुअल्स बेंड टुवर्ड्स अ स्किल सेट, जहां पर स्किल्स वहां रहेगी वो सब कुछ एप्टीट्यूड मेजर करता है। बट ऑन द अदर हैंड एटीट्यूड विल हेल्प यू टू फाइंड आउट वेयर अ इंडिविजुअल इज विलिंगनेस टू इम्प्रूव अ वीकनेस इन अ स्किल सेट, कहाँ पर उसको इम्प्रूव करना है अपनी स्किल्स को, कहाँ पर वो ज्यादा अच्छे से वर्कआउट कर सकता है, ये सब हमको पता चलेगा एटीट्यूड से। कॉम्पिटेंसी इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंसी, और एटीट्यूड हमें क्या बताता है, इट विल डिटरमाइन हाउ विलिंग एन इंडिविजुअल इज टू इम्प्रूव कॉम्पिटेंसी, मतलब वो कितने अच्छे से अपनी कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव कर सकता है, उसको किस किस एरिया में वर्क करना चाहिए। सो इस वजह द डिफरेंस बिटवीन द एप्टीट्यूड एंड एल्टीट्यूड which we have covered up. So if you have any doubt, just write in the comment box. Thank you.